Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will learn about the atomic structure, the fundamental particles summarized as, then introduction of the Bohr's atomic model on the basis of the Rutherford's defects, and then the Bohr's postulates will be discussed. Now here are given the particulars or the properties of the fundamental particles present in an atom as we have done it and by their discoveries, that discovery of proton, neutron and electron. You can see the charge upon each of them that is being mentioned. That proton carries a charge of 1.60 10 power minus 19 coulombs. It is with the plus sign, while neutron carry no charge. Electron carries minus 1.602 10 power minus 19 coulombs. Right? Then the relative charge present on a proton is, as it is considered as the unit charge, so it is plus 1 for proton, minus 1 for electron and 0 for neutron. Here the mass of the proton is given in kilograms, that is 1.67 into 10 to the minus 27. Then for neutron it is 1.6750 into 10 to the minus 27, while for electron it is 9.10 into 10 to the minus 31. The mass of these fundamental particles is also given here, that is 1.0073 of protons, then 1.0087 for neutrons, and electrons carry a mass of 5.4858 into 10 to the minus 4. Now here at the end there is given the location that protons and neutrons, they are present in nucleus as they produce collectively the mass of the atom, and outside there outside the nucleus there are present orbitals where these electrons they reside. Right? Students, in the previous lecture we have discussed the famous one Bohr experiment done by Rutherford. As you know very well, here he compared the structure of an atom just like the planetary model, and he considered it just like a solar system in which the center is there occupied by the proton, and the neutrons in the center, that is in the nucleus, while electrons are present around the nucleus in the particular orbitals, which are the circular parts in which they have to move. Right? If you remember, there was few defects in this atomic structure. That one was that if you are considering it just like that of the planetary motion, here the comparison is being given over there. So continuously electron is revolving around the nucleus, right? Then now this is just a repetition that how the Rutherford's atomic model was found defective, or which defects were being present in it. The two defects are mentioned here. Number one, if an electron is continuously moving around this central nucleus, just like planetary motion, so it is continuously emitting radiations, and in doing so, slowly, gradually, it is losing its energy and it will finally fall into the center. So in this way, the system should collapse, but it never happens that the system of or the atom that it collapses, right? And in doing so, it is going to produce a continuous spectra. It should be, क्योंकि ये continuously energy release करता चला जा रहा है when it is moving. It was the consideration, ये सोचा गया. So it should give us continuous spectra. Continuous spectra is just like this. तो यहाँ पे आपके पास continuously light is emitted of different colors. Now if this one is the true one picture, so continuous spectra हमारे पास आना चाहिए. But what we get a line spectra, right? Which is not explained by Rutherford. Right? Then the Rutherford atomic model was presented on the base of the experiment in 1911. That was controversial at that time. That it was not acceptable that all the positive charges are residing in the nucleus, right? So, and as well as what the defects were being found, they were removed by another physicist, that was the Danish scientist named as Niels Bohr in 1913.
who proposed an atomic model. A simple picturization is given. According to this, it is a 3D diagram which is given for the Bohr's model, in which the center is having the positive charge in it, and electrons, they are orbiting the nucleus like that of the planet orbits in the sun, right, which is quite similar to that of the Rutherford's atomic model. Now here the Bohr's atomic model is mentioned along with the postulates. You can see here in the diagram, in the center there is nucleus. The red balls, the red circles, they are showing you the electrons, while n, 1, 2, 3, they represents you the number of the shell in which electrons are residing, right? If this one is the first circular path around the nucleus where electron is residing, so this one is n1, that is first shell or first orbit, then onward second and third orbits, right? According to the first postulate, we say electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells in an atom without radiating energy. It means energy of each orbit is fixed. The electron which is residing here, that will stay there until it is going to get some change in the energy of the orbit, right? So we say the electron will reside here in the stable state, right, without any loss or gain of energy, as the energy of this orbit is fixed. It will radiate the light when it will absorb or it will lose energy at that time, but as the postulate says, electron will stay here, right, without any change in its energy, as the energy of this orbit is fixed, right? Now the second one is, as long as electron remains in a shell, it never gains or loses energy. आपने पीछे आयोनाइजेशन में पढ़ा होगा, अब कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है कैसे, द सब्सटेंस इट इज गोइंग टू गेन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स आउट, ठीक है। तो आप जरा सोचें इस बात को, इलेक्ट्रॉन तो अपने उसमें ऑर्बिट में रह रहा था मज़े से आराम से, आपने क्या किया, यू हैव गिवन इट हीट, आपने उसको टेम्परेचर दिया, आपने उसके लिए कंडीशंस बनाए कि वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी में रह रहा है आप उसको वहाँ से बाहर निकाल रहे हो बाय गिविंग इट एनर्जी, ठीक है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एनर्जी। तो वो जब एनर्जी इक्वलाइज कर जाएगी टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट के, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब करके एनर्जी वहाँ से जंप आउट कर जाए, ठीक है। सो दिस पोस्टुलेट सेज कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसी ऑर्बिट में स्टे करना है तो वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही कोई एनर्जी लूज करेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज the gain or loss of energy occurs within orbits only due to the jumping of electrons from one energy level to another energy level. This is what I was saying. अब देखें, this one electron, ये जो फर्स्ट शेल में है, अगर इसको जाना है अपर शेल में यहाँ, ठीक है। अब जैसे पिछले फर्स्ट वन पॉस्टुलेट हमने पढ़ा कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड, each orbit has a fixed energy, and this orbit, the first one orbit, is having different energy as compared to that of this second orbit, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से चेंज होता चला जा रहा है और इसका सर्कल बड़ा होता जा रहा है आपके पास में, ठीक है जी। सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स दैट इज डिफरेंट, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में मूव करना है तो क्या करेगा, ये ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल एब्सॉर्ब एनर्जी एंड देन इट इज एबल टू जंप टू द अबव वन। ऐसा करने में क्या करेगा, ये एनर्जी गेन करेगा। दिस रिप्रेजेंट्स यू कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपर लेवल में मूव करना है तो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा एंड देन इट विल जंप टू द अपर वन लेवल, ठीक है, और टू द हायर लेवल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को, अब ये जो सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल में, इफ इट हैज टू मूव इन द लोअर ऑर्बिट, नाउ कीप इट इन योर माइंड्स कि जो लोअर लेवल है वो कम एनर्जी का है एंड द अपर लेवल इज ऑफ हाई एनर्जी, तो अब क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसको हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आना है। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आने में इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स यू दैट रेडिएशन इज गिवन आउट because electron has to jump from the higher energy level to the lower energy level. Same is here being given. राइट ये n1 ये आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर है एनर्जी का फॉर द ऑर्डर्स। ठीक है, n1 लो एनर्जी पे है, n2 हाई एनर्जी पे है। अगर इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है तो इट हैज़ टू एब्जॉर्ब एनर्जी, और अगर इसको अपर से लोअर लेवल पे आना है तो इट विल बट क्या करेगा ये, इट विल गिव आउट एनर्जी और इट विल emit radiations, right? Now the last postulate is here, the angular momentum, that is the product of mass, velocity and radius, right? Angular momentum is the product of mass, velocity and radius of an electron is equal to nh over 2 pi, means the energy depends upon, what to say, the angular momentum जो है वो इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड करता है in which orbit it is residing. हर ऑर्बिट का रेडियस अलग है, ठीक है, और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ऑल्दो मास विल रिमेन सेम, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है दैट विल वेरी इन ईच ऑर्बिट। कोई ऑर्बिट आपके पास में लो एनर्जी का जैसे n1 है, तो हम यहाँ पे ये जो आपके पास में h/2 तो फिक्स क्वांटिटी है जनाब, विच इज यूज फॉर द सर्कुलर वन पाथ रेडियाई के लिए यूज होता है। ठीक है, और n रिप्रेजेंट्स यू विच शेल इज दिस वन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो जाएगा इक्वल टू दैट ऑफ द जो शेल, किस शेल में द इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग, वेदर इट इज शेल 1, शेल 2, शेल 3 और शेल 4। तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है ऑफ दैट ऑफ द ऑर्बिट, कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड कर रहा है। राइट, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ये आपके पास में h/2 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू mvr, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में जाओगे तो 2h/2 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू mvr। थर्ड में जाओगे तो 3h/2 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू mvr। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। It says the angular momentum of an orbit depends upon its quantum number. This is the quantum number n, which represents you the size actually of the orbit. It is of small size or it's of larger size. जो near to the nucleus orbit होगा वो सबसे small size का होगा, and gradually as the radius is increasing, तो shell size will on increase. ठीक है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ h/2 पाई। आप इसमें 1 2 3 4 5 6 यू कैन एड अप टू गेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट्स। डन हो गया। नाउ दीज